ever so faintly illuminating the International Space Station as it continues. Station Houston on the big loop. Dragon is transmitting docking camera video. Please confirm video and data updating in Dragon Docking Monitor. Also, we have a new docking time of 10:30. Copies. We are seeing data on the Dragon Docking Monitor, and we copy 10:30 for the new docking time. Houston copies. Great communications there on the big loop between the teams in Houston and SpaceX, talking to Dragon Grace and the confirmations of the updated docking time. You heard the words 10:30. That's 10:30 Zulu, which Central Time is 5:30, as we had mentioned, 5:30 a.m. Central, 6:30 a.m. Eastern, as we return to that exciting view from Dragon looking up at the International Space Station. You can ever so faintly see the solar arrays coming into view, and that strobe light illuminating the radiators, which are right along that central portion and angling upward. The International Space Station and the Dragon spacecraft now approaching the west coast of North America, right around the Seattle area, that border between the United States and Canada, as we are approaching 1 minute away from waypoint 1, the second checkpoint and second series of waypoints for the spacecraft to reach to. The teams have already pulled go, but we will listen for the call outs for that waypoint 1 arrival. Dragon SpaceX on the big loop, approach 1 and soft capture ring extension will begin shortly. Dragon will continue approach to waypoint 2. As a reminder, manual impulsive retreat recovery is not permitted. And Dragon copies all. And there you heard communications on the big loop about that soft capture ring, and that is the initial contact that will occur between the Dragon spacecraft and the International Space Station, a soft capture, with that soft capture ring then retracting and the 12 hooks that will drive and connect and form a hard mate between the spacecraft and the International Space Station. From there, power communications will then be connected up, and astronaut Nicole Ayers will make her way into the pressurized mating adapter and get ready for hatch opening procedures, which will require bringing the vestibule, the space between the two hatches, between the International Space Station and Dragon Grace, together. And there we see the orbital sunrise making its way over top of the International Space Station as they continue their pursuit of each other, now angling over at North America. And there in the center screen, if you look at the topmost, the Dragon now perfectly aligned over top of the International Space Station, now looking down at that Node 2 Zenith port, and a great view just off the bottom portion there. That is the Dragon Endurance spacecraft that it'll be just alongside of. So Dragon has reached waypoint 0, and on initial comms earlier that the teams on the ground, once reaching waypoint 1, have been allowed to bypass that waypoint and now move on to waypoint 2, which will be in about 9 minutes from now, and targeting docking in about 14.5 minutes from there. Go, no-go polls for docking in about 7 minutes as the teams on the ground continuing to monitor Dragon's progress. And once they arrive to waypoint 2, there will be a pause, make sure everything is lined up just perfectly before that final approach and docking.
This is Mission Control Houston as Dragon Grace and the spacecraft carrying Axiom Mission 4 and their 4 astronauts continuing their approach to the International Space Station. They have just made their way past waypoint 1, which had them at 220 meters away from the space-facing port of the International Space Station's Harmony module. And now on the path to reach waypoint 2, teams on the ground have concurred or agreed that they will take a brief pause at waypoint 2, which is 20 meters away, to make sure everything is aligned precisely. And there you see the view from Dragon and that newly illuminated International Space Station as the two craft navigating its way over North America, coming into an orbital sunrise and daytime period. Station on the big loop. Dragon attitude is still as expected, and station is ready for docking. Houston copies. At waypoint 2, Dragon will briefly pause to align for docking, then automatically resume approach. Station copies. Commentator Rob. You just heard great communications on the big loop from Station and Dragon, as well as the teams in Houston and in Hawthorne for SpaceX and NASA, as the Dragon Grace spacecraft continuing its approach to the International Space Station, carrying Axiom Mission 4 Commander Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, Sławomir Uznański-Wiśniewski of ESA, Dragon and SpaceX Tibor. Soft capture ring extension complete. Dragon will continue through waypoint 2 without a hold. Second copy, no hold at waypoint 2, and good rating extension. Great communications there. They were anticipating a brief hold to make sure everything aligns, but Dragon Grace continuing on what has been so far so good. A great rendezvous with the International Space Station. They will proceed to continue past waypoint 2. And you also heard in the communications with NASA astronaut Nicole Ayers, the station ready for docking. And a great view of the SpaceX Dragon Grace spacecraft making its glacial approach to the International Space Station, and the view from the space station looking up as it approaches the space-facing or node to zenith port of the Harmony module. We are about 4 minutes away from the waypoint 2 arrival, which again they are expecting to move right past through without a hold. That is at the 20-meter mark, and proceed right on into docking, a soft capture, and then soft capture ring retraction and hooks to drive. And that capture, about Dragon 8 minutes SpaceX and 47. on the big loop, ground is go for approach 2, and approach is now allowed.
Reminder, ensure that visors are closed prior to Dragon's departure from the waypoint. Once Dragon is inside the crew hands-off point, retreat and breakout are not permitted. Dragon copies, and we have visors down, and we are go for docking as well. And copy on the approach. Inside 2, stop. SpaceX copies, visors down, SpaceX Crew is go for docking. All great communications there as the communications from the ground up to the SpaceX Dragon Grace spacecraft as visors are down on the 4 astronauts inside as they continue their approach to the International Space Station, now nearly 7 minutes away from that initial contact. Dragon and the International Space Station now making its way over the northernmost territories of North America and Canada, and heading towards the Atlantic Ocean as we are now 7.5 minutes away from the approximate docking time as Dragon will move smoothly past waypoint 2, about 20 meters away. And continuing its fine-tuning and approach, you see little plumes coming off the spacecraft. Again, those are those thruster firings continuing to inch and adjust the spacecraft towards the orbiting laboratory. Dragon continuing to get bigger and bigger from the viewpoint of the International Space Station as waypoint 2 about 90 seconds away, and there it'll be just a mere 20 meters away. And there the spacecraft will focus on aligning its docking system with the docking adapter and then fly in to make the initial contact and give us what we will call that soft capture, or the soft capture ring will retract. And then the hooks will drive to form the hard mate. And that capture, or that initial contact, coming in about 6 minutes from now. Yes, they have it. I can press them. They switch it out. Approaching 30 seconds away from waypoint 2 arrival, in which the Dragon spacecraft will be about 20 meters away, just called out 30 meters, so continuing its close in to the International Space Station. Dragon Grace now 25 meters away. Dragon has now reached waypoint 2, 20 meters away from the International Space Station, and will continue its approach to the International Space Station. And there you can see a great view of that zenith port, that space-facing port on the International Space Station's Harmony module. As the Dragon spacecraft right now sitting at waypoint 2, just 20 meters away. Houston,
Houston station per step 4 in block Bravo. Dragon attitude is as expected. Houston copies. Station Houston on the big loop. Dragon is on final approach and is go for docking. Monitor per steps 5 and 6 and 1.102. Station copies. Monitoring per steps 5 and 6. And there you heard it. The final steps relayed up to the crew for final approach and docking have been given as we continue to see Dragon Grace spacecraft close the gap between them and the International Space Station. Now, just before the spacecraft reaches the international docking adapter for that soft capture, you'll hear the call out CHOP, or crew hands off point, which Dragon will continue its journey and make that initial connection, that soft capture, in those final few moments. SpaceX Dragon, 10 meters. 10 meters. Inside 10 meters, a little less now than 30 feet away, is all that separates Dragon Grace from the International Space Station. Five meters. 5 meters. Meters, chop. 2 Houston meters. station, 2 meters, chop. We have CHOP. 1 meter. 1 meter. Dragon contact and soft capture complete. Dragon copy. Dragon Grace and the Axiom Mission 4 crew have arrived to the International Space Station at 5:31 a.m. Central Time over the North Atlantic as the two orbiting around the Earth, connecting with the soft capture ring, and now we'll begin the ring retraction to bring
the two vehicles closer together, and then the 12 hooks, the two sets of 6 Ring will drive to retraction in form a progress. hard nut. And there you heard there, the soft capture ring is retracting, and then we'll do so until sensors are indicating it's time for those hooks to drive in place and give us a hard capture and firmly secure Dragon to station. And again, Axiom Mission 4 and its commander Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, and mission specialist Sławosz Uznański-Wiśniewski and Tibor Kapu of ESA and Hunor have arrived to the International Space Station with contact at 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern, as the two were orbiting over the North Atlantic. इंतजार है, तिरंगे की शान बढ़ाई है। शुभांशु ने शुभ घड़ी आ चुकी है, हर हिंदुस्तानी बधाई दे रहा है। और जो ये डॉकिंग होने वाली है, दरअसल डॉकिंग का मतलब है अंतरिक्ष में दो उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट्स या अंतरिक्ष यानों को एक दूसरे के साथ सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से जोड़ना। ये बेहद जटिल प्रक्रिया होती है और अब ये डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखिए, डॉकिंग हो चुकी है, भारत ने इतिहास रच दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सभी को गौरवान्वित करने वाली खबर है। भारत का मान बढ़ाया है शुभांशु शुक्ला ने। देखिए, सभी को बेसब्री से इंतजार था जिस तरीके से भारत के शुभांशु ने ये उड़ान भरी। और आपको बताएं कि काफी बार ये जो मिशन था SpaceX का, ये टला, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से। अंतरिक्ष में हिंदुस्तानी है और ये बहुत खुशी की खबर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला और अगले 14 दिनों तक वहां पर रहेंगे, रिसर्च करेंगे। और उन्होंने कहा कि रोमांचित करने वाला ये सफर है और जिस तरीके से बच्चा चलना सीखता है वो भी अभी सीख रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हुई है, भारत ने भी इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये सभी की नजरें इसी पर थी, किस तरीके से ये इतिहास रचा गया है। हालांकि कई बार तकनीकी कारणों से ये मिशन टला जरूर है, लेकिन संयम बहुत जरूरी होता है। और अब अगले 14 दिन तक स्पेस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला और वहां पर रिसर्च करेंगे। और शुभांशु शुक्ला का जो संदेश आया, उन्होंने कहा कि वो काफी एक्साइटेड हैं कि किस तरीके से 14 दिनों में वो काफी कुछ सीखेंगे और उसके बाद लोगों से साझा करेंगे और वो बहुत खुश हैं। ऐसे में आप देखिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला, उनके साथ बाकी के 3 यात्री और है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सियोम 4 जो ये मिशन है, ये बेहद खास है क्योंकि अलग अलग मायनों में ये खास है। इसके जरिए भारत ने इतिहास रच दिया है। और आपको बताएं कि शुभांशु शुक्ला साल 1984 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय यात्री हैं और साल 2026 में भारत जो मिशन गगनयान लॉन्च करने वाला है, देखिए उसके लिए भी ये मील का पत्थर है क्योंकि एक मजबूत कड़ी है जो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है गगनयान मिशन, उसके लिए भी ये काफ़ी मायने रखता है। और जो हमारा मिशन अगले साल होने वाला है और ऐसे में जो अब शुभांशु शुक्ला पहुंचे हैं, इस मिशन से भी काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। अनिका झा स्पेस साइंटिस्ट हैं। अनिका, ये जो पल है इसका इंतजार बहुत समय से था। भारत ने इतिहास रच दिया है। डॉकिंग की प्रक्रिया जो कि काफी जटिल होती है, आप इस सफर को कैसे देख रही हैं, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? Okay, so first of all, thank you so much for the question. Okay, so after 41 years, he is carry forwarding the राकेश शर्मा's legacy. क्योंकि राकेश शर्मा जी गए थे इससे पहले स्पेस में 1984 में, तो he is the first Indian to go to ISS and the second Indian to go to space. So ये अपने आप में ही एक बहुत गौरवान्वित कर देने वाला विषय है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा एक इंडियन एस्ट्रोनॉट, जिसे हम व्योमनॉट बोलते हैं, वो कभी ISS पर जाएगा।
क्योंकि ISS अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है। अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो 2 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना वो अकेला ISS है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही है वहाँ पे। ये जाके अपने भारत के 7 रिसर्चेस करेंगे, वहाँ पे 6 रिसर्चेस करेंगे, जिसमें से कि 60 रिसर्चेस, टोटल रिसर्चेस इफ वील टॉक अबाउट, दे आर 60 एंड आउट ऑफ देम 7 रिसर्चेस आर डन बाय इंडिया, विल बी डन बाय इंडिया, जो कि इंडिया के थ्रू गया हुआ है हमारे ISS पर। तो अनिका, अगर आप आसान शब्दों में बता पाएं कि भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, क्योंकि अगले साल हमारा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन भी लॉन्च होने वाला है और ये हमें काफी अनुभव देगा उस मिशन के लिए। जी 2027 में हम गगनयान मिशन प्लान कर रहे हैं एंड इवन 2035 तक हम अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि शुभांशु जी अपने साथ बहुत सारी की लर्निंग्स लेके आने वाले हैं जब वो ISS पर जाएंगे। अब 4:30 पे वो डॉकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो वो आप अपने साथ काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लेके आने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए। और 2040 तक हम लोग वी आर प्लानिंग, लाइक ISRO इज प्लानिंग टू सेंड व्योमनॉट, दैट इज द इंडियन एस्ट्रोनॉट, टू मून। तो ये अगर आप अनिका, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे, अगर आप हिंदी में हमारे दर्शकों को समझा पाए तो बेहतर रहेगा। और देखिए, जो शुभांशु शुक्ला की कहानी है ये आने वाले हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, और उनके माता पिता से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अमित सिंह ने, वो हम आपको पहले सुनवाते हैं। शुभांशु की मदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैम, कल उन्होंने उड़ान भरी और आज थोड़ी देर में ISS पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी पहुंचने आ रहे हैं, वही हम भी देखने आ रहे हैं। काफी ज्यादा खुश है, मुस्कुराहट है चेहरे पे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि शुभांशु की मदर सबसे मिलती है, काफी ज्यादा खुश हैं आप, मुस्कुराहट है चेहरे पर। रात में नींद अच्छी आई? बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी। कल काफी टेंशन थी, इसलिए आज जो है वो रिलैक्स चल रहा है। वो देखना, वीडियो देख रही हूँ, बड़ी देर से देख रही हूँ। तो आपने ये तमाम मैसेजेस वगैरह देखे जो शुभांशु ने दिए हैं? हाँ, देखा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वो खुश है, सब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उड़ान भरने से पहले इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने मैसेज दिया था अपने फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, वो भी देखा था। वो भी देखा था। काफी खुश है और आप ISS पे लैंड करने वाले हैं। बहुत खुश है, और क्या, अच्छी बात है ये तो। खास बातचीत की है, कुछ देर पहले की ही ये बातचीत है जब डॉकिंग हो रही थी। डॉकिंग हो चुकी है, इतिहास हमने रच दिया है, और जो है भारत न सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंच रहा है बल्कि इन कोशिशों को भी आकार दे रहा है कि वहां पर मनुष्य कैसे रहेंगे, खाएंगे, जीवित रहेंगे। और इन प्रयोगों की सफलता के से अंतरिक्ष में मानव पोषण में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। और जो भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है गगनयान, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बनी हुई है, और देखिए ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉकिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। अनिका, आप समझाइए कि डॉकिंग प्रक्रिया होती क्या है, क्योंकि काफी जटिल ये प्रक्रिया होती है। उसके लिए थोड़े से चिंतित थे, उनके माता पिता भी चिंतित थे, वैज्ञानिक भी चिंतित थे, लेकिन अब वो पूरी हो गई है। जी, जब एक रॉकेट जब स्पेस में जाता है तो सबसे पहले वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट स्टेज जो कि विद इन 2-3 मिनट्स कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड स्टेज में जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है, जो पेलोड है, जिसे अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे जाना है, जो कि अगर अभी हम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो उसका डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन था ISS। तो स्टेज 2 में उसको ऑर्बिट में ले जाया जाता है, जो हमारा पेलोड होता है, और उसके बाद जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है वो काफ़ी बार ऑर्बिट करता है अराउंड अर्थ को, मतलब अर्थ के अराउंड वो घूमता है, एंड उसके बाद वो प्रॉक्सिमिटी में पहुंच जाता है, उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही ISS के पास, तो वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है उसकी स्पीड को हम कम कर देते हैं। और लेट से ये ISS है और ये हमारा स्पेसक्राफ्ट है। तो अगर हम ISS की बात करें तो टोटल 8 डॉकिंग और बर्थिंग साइट्स हैं हमारे ISS की। तो ये अभी हार्मनी मॉड्यूल एक डॉकिंग साइट है, जहाँ पे ये हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो जाके अटैच होगा, और वहाँ पे हम सारे सेफ्टी चेक्स करते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो प्रॉपर इक्वल है कि नहीं है, या कहीं से कुछ लीक तो नहीं हो रहा है, प्रॉपरली वो एयर टाइट है कि नहीं है। जैसे ही ये प्रक्रिया जो भी है, सेफ्टी चेक्स ये सारे पूरे हो जाते हैं, तब गो टू कॉल मिल जाती है जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं। एंड उसके बाद हैच, जिसे हम डोर बोलते हैं, वो ओपन होता है, और उसके बाद ये सारे एस्ट्रोनॉट्स ISS में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे
पहले से क्रू 10 मौजूद है और उसमें 7 क्रू मेंबर्स ऑलरेडी हैं ISS में। वो इन 4 एस्ट्रोनॉट्स जो कि अब गए हैं उनका वेलकम करेंगे, उनका ओरिएंटेशन होगा प्रॉपर तरीके से, उनको देखा जाएगा कि उनकी जो हेल्थ कंडीशंस है इनिशियली वो कैसी हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा टाइम स्पेन है जिस मिशन के लिए गए हैं, वो अराउंड सिर्फ 14 डेज़ का है। तो 14 डेज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी है, जो हमारा मसल स्ट्रेंथ है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो विद इन डे 1 जो कि अब शुरू हो चुका है, तो अभी से प्रॉपर चेकअप इनका स्टार्ट हो जाएगा और एंड तक ये रेगुलरली इनका चेकअप किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे रिसर्च का एक पार्ट है। बिल्कुल, तो ये जो शुभांशु शुक्ला का सफर है ये हर किसी के लिए मिसाल है। आप समझिए कि सालों की मेहनत है। 10 अक्टूबर 1985 को इनका जन्म होता है। 2006 में इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल हुए। 2019 में गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए। 2021 तक रूस के यूरी गागरिन ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग पूरी की और 2022 में बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में ट्रेनिंग जारी रखी। और उसके बाद आपको बताएं कि 2024 में ग्रुप कैप्टन बनाए गए। 2025 स्पेसएक्स में ट्रेनिंग पूरी की और स्पेसएक्स ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा के लिए चुना गया। और ये देखिए ये यहाँ पर पहुंच भी गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय। ये बहुत कुछ ये अध्याय है, नया अध्याय है जो कि बहुत कुछ यहाँ पर सिखाता है, अनुभव देगा जो हमारे आगे के स्पेस के मिशन होने वाले हैं। अनिका, आप ये बताइए कि जो अगले 14 दिन हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल यहाँ पर प्रक्रिया थी, डॉकिंग की प्रक्रिया, ये पूरी हो चुकी है। क्या 14 दिनों में भी कोई टेक्निकल फेलियर हो सकता है? किस तरीके से आप इन 14 दिनों के सफर को देखेंगी और यहाँ पर क्या क्या चीजें चुनौतीपूर्ण रहने वाली हैं इन 14 दिनों में? जैसे कि अभी ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बाद ये लोग एंटर करेंगे और उसके तुरंत बाद जो क्रू है वो इनका वेलकम करेंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन होगा। जैसे कि हमारे घर कोई आता है तो हम उन्हें दिखाते हैं कि ये कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है। उसी तरीके से जो क्रू 10 अभी वहाँ पे एनी मैकलेन और बाकी सारे क्रू मेंबर्स वहाँ पे है, वो उनको सारी जगह दिखाएंगे, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन किया जाएगा, बताया जाएगा कि कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स है, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और उसके बाद ये जो भी अपनी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो भी रिसर्च वर्क लेके गए हैं वो उनको लेके आएंगे, क्योंकि इनके पास काफ़ी कम समय है। ये सब कुछ अनलोड करेंगे और सारी चीज़ों को अनलोड करने के बाद ये अपना रिसर्च वर्क शुरू करेंगे। उससे पहले ये प्रॉपर रेस्ट करेंगे, इनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। और उसके बाद ये सारी जर्नी जो भी इनकी जर्नी रही है यहाँ तक की, वो तो चैलेंजिंग थी ही, बल्कि स्पेस में जाके भी, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी आ जाती है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नियरली 0 हो जाती है। तो वहाँ पे सरवाइव करना, दो इनकी ट्रेनिंग काफी अच्छी रही है। जैसा कि शुभांशु ने कहा भी कि जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, मैं भी इस सफर में सीख रहा हूँ। उन्होंने नासा के वैज्ञानिकों से सबसे खास बातचीत की है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने से पहले। शुभांशु शुक्ला की वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। And Axiom 4 from Houston, welcome aboard the international. नमस्कार, एक छोटा सा संदेश मेरे सारे देशवासियों के लिए। कुछ ही देर कल 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से पहली मून लैंडिंग, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। और इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर्स पे था, जो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था कि मैं अकेले ये जर्नी नहीं अंडरटेक कर रहा हूँ, बल्कि आप सब मेरे साथ हैं और इस जर्नी का एक हिस्सा हैं। तो ये ISS तक जाने के लिए मेरी एक जर्नी की शुरुआत है एक तरह से। अभी हम लोग कुछ ही घंटों में ISS में डॉक करेंगे और फिर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके रहेंगे। बट कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं गगनयान जैसे मिशन को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने, आप भी उतना ही प्राउड फील करें जितना मैं फील कर रहा हूं, बिकॉज ये सब हमारे केवल टेक्निकल एकम्प्लिशमेंट को नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारे ये होप्स या हमारे एम्बिशंस या हमारे एस्पिरेशंस को दर्शाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं।
तो आइए मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 14 दिनों में मेरा जो मिशन एकम्प्लिशमेंट है, जो टास्क है, वो तो मैं अचीव करूँ ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर करूँ ताकि मैं वापस आके आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूँ। तो शुभांशु शुक्ला को आप सुन रहे थे। तिरंगा उनके पास है, उन्होंने कहा कि ये तिरंगा उनको बतला रहा है कि हर भारतवासी उनके साथ है। अनिका हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अनिका, शुभांशु शुक्ला का जो एक्सपीरियंस है वो हम सुन रहे थे और वो काफ़ी एक्साइटेड थे, उन्होंने कहा भी और बताया अपने सफ़र के बारे में। लेकिन आप बताइए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक आम नागरिक है वो जानना चाहता है कि कैसा होगा, कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, कितना ये बड़ा है, क्या क्या खास बातें हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओलंपिक स्विमिंग पूल होते हैं उनका डबल, उनका दुगुना उतना बड़ा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अगर मैं आम लैंग्वेज में बोलूँ तो। और इसके अंदर 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स हैं, मतलब 6 लोग इसके अंदर आराम से सो सकते हैं। 2-7 लोग पहले से थे और अभी 4 लोग और गए हैं, तो उनको टेम्पररी प्लेसेस ढूंढनी पड़ेंगी। जो भी क्रू 10 है वहाँ पे वो उनको बतलाएगा कि कहाँ पे वो लोग टेम्पररी प्लेसेस चूज कर सकते हैं सोने के लिए, वो पहले से ही डिसाइड हो चुका होगा। और इसमें 2 वॉशरूम्स हैं, 2 बाथरूम्स हैं, एंड देन इसके अंदर एक 360 डिग्री विंडो है जिसके नीचे जाके हम देख सकते हैं। एक प्रॉपर एक डिजायर्ड लोकेशन है जिसके अंदर हम जाके देख सकते हैं। बिल्कुल 360 डिग्री का व्यू आता है और ISS से हम इजीली अपने पूरे अर्थ को देख सकते हैं। इवन ISS में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है जिससे हम अर्थ की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इवन कुछ प्रोसीजर के थ्रू हम ISS से हमारे अर्थ की पिक्चर्स को मंगा भी सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस की पिक्चर्स हम मंगा सकते हैं। और ये अगर हम ISS की स्पीड की बात करें तो वो 93 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है अर्थ का, और वो करीब 15.5 टाइम्स अर्थ को ऑर्बिट करता है विद इन 24 आवर्स। तो काफ़ी फास्ट है ये ISS हमारा। और जब हम यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो हमें काफ़ी सारा टर्बुलेंस फील होता है, बट अगर हम ISS क्योंकि बहुत फास्ट मूव कर रहा है, बट वहाँ पे कुछ टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए होता नहीं है, तो वो इजीली सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर पाते हैं। और ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स ISS में करने वाले हैं बेसिकली वो माइक्रो ग्रेविटी पे बेस्ड होगा कि माइक्रो ग्रेविटी में चीज़ें कैसी रहती है, क्योंकि वहाँ पे हम ग्रेविटी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। इवन अगर मैं अपना फ़ोन पकड़ूँ, कुछ स्पून, जो भी चम्मच वगैरह सब कुछ हवा में उड़ रहा होता है, खाना वगैरह सब हवा में उड़ रहा होता है, तो वहाँ पे एक स्पेशल ट्रे होती है जिस पे वो लोग खाना खाते हैं। और इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोग अपना यूरिन वगैरह ही रिसाइकल करके उसको ही यूज़ किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ये सारी चीज़ें। एंड काफ़ी लोग इवन जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ISS में, जब वो वापस आते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं होती है। क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इवन आप लोग भी अपने घर बैठ के ये TV देख रहे हैं। तो ग्रेविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि स्पेस में बहुत कम है, जिसे हम माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं, लगभग 0 के बराबर होती है। तो उन लोगों को आदत हो जाती है कि अगर उन्होंने पेंसिल पकड़ी है तो वो ऐसे छोड़ देते हैं उसे ISS में, क्योंकि वहाँ वो फ्लोट करती है। तो जब वो वापस धरती पर लौटते हैं तो उन्हें वो चीज़ से निकलने में वक्त लग जाता है। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें अर्थ पे भी आने के बाद छोड़ देते हैं। तो अपने आप को ढालने में समय लगता है, क्योंकि आसान नहीं है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं, हमने पहले भी देखा है जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं, उसके बाद इस तरीके से उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, जो ग्रेविटी वहाँ पे नहीं होती है। और अनिका, ये जो सफ़र है ये सिर्फ लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो भारत का जो अंतरिक्ष में मानव जीवन को संभव करने की दिशा में भारत की भागीदारी को भी ये मिशन दर्शाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम USA की बात करें तो अभी नासा और USA आने वाले टाइम में, इवन नेक्स्ट मंथ में एक सैटेलाइट को बना चुके हैं, ऑलमोस्ट बस लॉन्च करने वाले हैं। ISRO नासा सिंथेटिक रेडार सैटेलाइट, जिससे कि हम धरती के अंदर 100 किलोमीटर अंदर, जैसे एक्सरे में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, वैसे ही हम बिल्कुल सारा जियो साइंटिफिक चीज़ देख सकते हैं धरती के अंदर, कितने मिनरल्स क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये बाकी सारी दुनिया हमारे ISRO में भरोसा जता रही है।
आज हमारा इसरो बाकी कंट्रीज़ की भी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसरो सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है। तो ये एक अपने आप में इसरो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम देखा जाए तो जैसे ही मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन की बात करते हैं, आदित्य L1 की बात करते हैं, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस है। अगर मैं एक मूवी की बात करूं उदाहरण के रूप में, तो एक मूवी थी इंटरस्टेलर, जिसका खर्चा, उस मूवी को बनाने का खर्च अगर मैं बात करूं तो 800 करोड़ से ज़्यादा का था, और उससे कम में हमने अपने जितने भी मिशंस हैं, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन को पूरा कर दिया। तो इसरो को लोग एक बहुत एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन और इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख रहे हैं, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम कर रहा है।